माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, प्लीज बैठ जाइए. Members should be in their places before the house commences. बाद फिर इधर उधर मूव करते हुए डिस्टर्बेंस होगा, डाइवर्शन होगा. Papers to be laid on the table. General retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name as serial number 1 of the revised list of business. These contain a notification by the Ministry of Road, Highways and Transport on the amended recruitment regulations of the NHAI. Sir. Okay. Even otherwise, he seems to be not retired. He is not tired also. Every day is. This is how it is mentioned. General V.K. Sir, Singh retired. It is General V.K. Singh retired. Okay. We'll follow it. Correct. साध्वी निरंजन ज्योति. महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. श्री नित्यानंद राय. महोदय, आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. श्री राजीव चंद्रशेखर. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of the revised list of business for today. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ. श्री अजय भट्ट. With your permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्री B.L. वर्मा. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ. सुश्री प्रतिमा भौमिक. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ. डॉक्टर सुभाष सरकार. Kind permission, I raise to lay on the table of the House the paper mentioned against the name of Subhash Sarkar. Mr. Dr. Subhash Sarkar at serial number 9 in today's revised list of business. Sarkar. हाँ. You are Subhash Sarkar. उसके नाम में sir. I have not given you permission. Please sit down. It will not be part of the record. Minister, for any reason, is going to be absent. He should write the chairman, seek the permission, and then say so and so minister. And even the minister also should say, sir, on behalf of. You cannot take that liberty and then place the papers. Because name is given Dr. Subhash Sarkar. Dr. Munjipara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned serial number 10 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Bhagavat Karad, which I have allowed that way after seeking permission. Honorable Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name in the revised list of business for today. Message from Loksabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 5th April 2022 has agreed without any amendment to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th of March 2022. Report of the Committee of Privileges, Sri P. Wilson. Chairman, sir, with your permission,
I rise to present the 72nd report in English and Hindi of the Committee of Privileges in the matter of breach of privilege arising out of allegedly casting aspersion on the Honorable Chairman, Rajya Sabha, by a member in a press interview. Thank you, sir. Report of the Department Head Parliament Standing Committee on Commerce, Sri Anil Desai. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table 169th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 161st report on review of the intellectual property rights regime in India. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Sri A. Vijay Kumar. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise to lay the 13th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. Thank you. Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology, Sri Jawahar Sarkar. Sir, with your permission, I rise to lay on 3 statements, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 28th, 29th and 31st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 21-22 as listed against my name. Statement of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Sri Sakaldeep Rajbhar. धन्यवाद महोदय जी। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पीएचडी में प्रवेश और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में छठे प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विध सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा के अध्याय 1 में अंतर्विध सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई और अध्याय 5 में अंतर्विध सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरणों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। जय। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। Honorable members, I was so impressed yesterday about the discussion in the House on the 2 bills. One is the chartered accountant related issue. The other one is about the merger of Delhi municipal corporations. I was so happy the patience shown by the chair, deputy chairman, and by the members cutting across party lines, the way they spoke. I followed each one of them, and also the minister who piloted and replied to the bill up to the point, sharp, but at the same time brief. I felt very happy, and I have also made a note to include it in my memoir also because it's very impressive. And some of the others also called me on over phone also, and they also mentioned it. Another thing they have mentioned is about the performance of the members who have conducted that entertainment cultural program on that day. It was so impressive. Of course, 6 of them. I was there myself, so I enjoyed it. But people had an opportunity to see it in yesterday's Sansad TV, I think, review program. So I also felt happy that some of my members, they have such a talent. And then
people who sought permission, they have been given an opportunity. And you are going to retire, then you will also get an opportunity. If you make a request. Members, before going to 0 hour, I received notice from Mallikarjun Khargeji, Susmita Dev, Sri Rajno Jokulam Felorio, and Mohammed Rajmul Haq. One is about inflation, other is about instance of hate speeches. They do not come under the purview of 267 to suspend the business of the House. And please. No, even if you give everyday notice also, if it is not worth to be taken up under that rule, I will not do it. Please. Please, you sit down. There is no need to, please. No, even LOP also, he can only mention, he cannot speak on this because others also, please. No, speech is one sentence. Sir, I have given a notice under Rule 267 regarding the rising instances of hate speech against minorities in the country and also the harassment done to the journalists, particularly the Hindustan Gazette, News Laundry, the Quint, Article 14, etc. And this is going on, and Swamijis are speaking and instigative speeches they are giving. Not only that, the right from Haridwar to Delhi on Sunday, one Swami said that all Muslims should be butchered. And this will not go on record. No community name will go on record. Please, I have not. No. We should not quote his words now if he has uttered a meaningless word. Again, raising it in the House. And then having discussion who spoke what. That is not going to solve the problem. Thank you, Khargeji. So, I have not allowed, and nobody should indulge in hate speech against any community, minority or majority. Communities should not be taken into this thing, and nobody should make any speech against anybody. That's all. Sri Ajay Pratap Singh, please. Ajay Pratap Singh. Today, 23 0-hour mentions are there. Please cooperate. माननीय सभापति महोदय, भगवान राम भारतीय जनमन के रोम रोम में बसे हुए हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। जहां प्रभु राम का नाम आता है, वहां पर संपूर्ण भारतवर्ष एकजुट हो जाता है। और इसीलिए भगवान राम की गाथा पूरे भारत में गाई जाती है, पूरे भारत में पढ़ी जाती है। आज रामायण के लगभग विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में मिलाकर 300 से अधिक संस्करण उपलब्ध हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय विषय पे आ रहा हूं सर। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई भी देता हूं। अयोध्या में उनकी जन्मस्थली के अतिरिक्त भगवान राम की जो लौकिक लीला थी, उस लौकिक लीला के संदर्भ में लगभग पूरे देश में 250 से अधिक स्थान हैं जहां पर भगवान राम ने कुछ समय व्यतीत किया है। उनकी स्मृतियां हैं। स्मृतियां श्रुतियों के माध्यम से हैं, किंवदंतियों के माध्यम से हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने घोषित किया था कि हम रामायण सर्किट के माध्यम से इन स्थानों का विकास करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 2015 में जिस तरीके से सरकार ने घोषित किया था, इन सभी स्थलों का विकास करे। इसके विकास के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धार्मिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, अपितु इन स्थलों के विकास के माध्यम से रोजगार और व्यापार भी विकसित होगा। मैं इस संदर्भ में नर्मदा माँ का भी स्मरण करना चाहता हूँ। माँ नर्मदा
एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमावासी अनेक कष्ट उठाकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं, तो मां नर्मदा का परिक्रमा पथ ही विकसित किया जाए, जिससे परिक्रमा वासियों के आश्रय की व्यवस्था हो सके, भोजन की व्यवस्था हो सके, उनके लिए अन्य सुविधाओं का सृजन हो सके। और मां नर्मदा के किनारे पे अनेक नगर बसे हुए हैं, उन नगरों का गंदा पानी भी नर्मदा नदी में न जाए, इसके लिए भी सरकार को उपाय करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राम की लौकिक लीला के स्थलों पर और नर्मदा के परिक्रमा पथ पर विकास हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करे। जिस तरीके से नमामि गंगे के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है, वैसे इन दोनों प्रताप जी, समय समाप्त हो गया। श्रीमती जया बच्चन and Sri Shiva to associate. Jaya ji will take 2 minutes and then Shiva will take 1 minute. Okay. Thank you, sir. Sir, I'm a little embarrassed to have brought this notice for the 4th time in this house on manual scavengers. Sir, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो ट्रैप हो गए थे, वो उनकी तो जान चली गई, जो बचाने के लिए बेचारे गए थे उनकी भी जान चली गई। उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब तो इस सरकार के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्होंने ये भी अपने जोखिम अपने सर पे ले लिया है। कल ही इसी का प्रस्ताव हम लोगों ने सबने इसके ऊपर बात की। Sir, according to the Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act of 2013, disallows all kinds of employment that force individuals to engage within human excretia manually, but data from the National Commission for Safai Karmachari reveal that in India, one manual scavenger dies every 2 days. That's 1,470 people have died cleaning sewer lines and septic tanks in the past 2 years, sir, which is really a shame. Due to lack of rehabilitation and reintegration program and rampant unemployment, manual scavengers are forced to return to work in inhuman conditions and for meager salaries.